दज्जाल के ज़ाती तौर पर ज़ाहिर होने से पहले उसका एक निज़ाम या सिस्टम दुनिया पर राइज किया जाएगा। यकीनन ये सिस्टम वही लोग राइज करेंगे जो उसके आने के इंतजार में है, यानी यहूद और उनके हवारी। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने मसीह दज्जाल के बारे में बताया कि अल्लाह एक आंख वाला नहीं, जबकि दज्जाल सीधी आंख से अंधा होगा और उसकी दूसरी आंख ऐसे बाहर होगी जैसे अंगूर। अगर आप इस आंख को गौर से देखें जो डॉलर पे बनी है और जो फ्रीमेसनरी का निशान भी है, तो यकीनन आप इस बात को नोट करेंगे कि यह आंख भी उल्टी आंख है। The pyramid is a familiar symbol. The eye emanating light is not, possibly derived from an Egyptian god's eye. जबकि डॉलर पे बनी हुई एक आंख हमें कई जगह नजर आती है, फिरौन के पिरामिड्स में और ईसाई मजहब में भी। जबकि मिसनरी में आंख का तस्वुर यह है जो हर वक्त हर चीज को देख रही है। वो चीज क्या है ये कोई नहीं जानता। For America's founding fathers, the all-seeing eye was a way of acknowledging God without referring to a specific church. They have an all-seeing eye to suggest the notion that somehow, without a specific Christian God concept, someone, some being, some presence is overlooking the world. The Masons in the 1700s understood the power of symbols to communicate deep psychological ideas, complex political ideas. They're almost Zen-like in how simple they appear and yet how 17वीं सदी के मेसन्स ने सिंबल्स की अहमियत को समझते हुए उनका इस्तेमाल किया। decoded. When Washington swore his oath of office in 1789 on a Bible borrowed from a Masonic lodge and held by a fellow Mason, the fraternity had a unique opportunity to shape their new nation. And they took it. In the early days of the American Republic, President George Washington, a Freemason worshipful master, played a key role in designing the city that would bear his name. George Washington, he's intimately involved with his creation, a creation of this new capital city right near his home. वॉशिंगटन ने दारुल हुकूमत को डिजाइन करने में अहम किरदार अदा किया। वॉशिंगटन ने दारुल हुकूमत का जो डिजाइन बनाया वो मुकम्मल तौर पर उसके मेसन होने के ख्यालात की अक्कासी करता है। Reflected Washington's deepest beliefs, beginning with the president's insistence that the district be set on an exact 10-mile square. The city was designed scientifically and geometrically. Why? To send a very important message. That unlike the old order, where the reliance was on religion mainly to govern the affairs of the people, under the new order, the reliance is going to be mainly on reason, the scientific method, इस डिजाइन से जाहिर होता है कि अब पुराना ऑर्डर खत्म हो गया है जिसमें मजहब का अमल दखल था। अब एक नया ऑर्डर आ गया है जो वजूहात और साइंस की रोशनी में लोगों पर हुक्मरानी करेगा। L'Enfant added the distinctive streets radiating out from focal points like the Capitol. But to many members of the fraternity, the result reflected a uniquely Freemason vision of America. It reflects ideals of architecture and masonry espoused by the fraternity. The top of the compass is the Capitol. One axis of the compass goes to the White House. The other one is from the Capitol to the Jefferson Memorial. And then the square is from the Lincoln Memorial to the White House, Lincoln to Jefferson. For this square and compass to be completed, the Jefferson Memorial needed to be where it is today. And you know, that part of the river was landfilled for about 6 years, from 1933 to 39, under Franklin Delano Roosevelt. Oops, happened to be a Mason, by the way, but I don't know. Lower the stone! Regardless of whether it concealed a Freemason code, Americans celebrated the founding of their capital with patriotic fervor. Masons played a central role.
In 1793, the Freemasons were asked to lay the cornerstone of the United States Capitol. Washington himself, dressed in his full Masonic regalia, performs a Masonic ritual which includes libations of corn, wine, and oil. Now maize is a symbol वॉशिंगटन of डीसी के संग abundance, बुनियाद रखते हुए मेसन्स ने मरकजी किरदार अदा किया। oil is a symbol of peace. इस तकरीब में जो लोग शरीक हुए उनमें जॉर्ज वॉशिंगटन सर फहरिस्त था, Thomas Jefferson talks जबकि about the थॉमस capital जेफरसन ने being कहा कि ये शहर दुनिया के the लोगों के first लिए temple एक मंदिर की dedicated हैसियत to होगा। sovereignty of the people. They're acting in some ways as sort of priests of this new nation. They are taking on a sacred function. So mote it be. For generations, people have speculated about whether there is a secret Freemason code hidden on the dollar bill. People will tell you that it was put there by the Freemasons, that there are secret words and anagrams. कई पुश्तों से लोग ये तस्वर करते हैं कि डॉलर के ऊपर कोई ना कोई खुफिया पैगाम छुपा हुआ है। MASON, that 1776 is the year that the Illuminati of Bavaria was यानी formed. इसी 1776 जब इल्यूमिनाटी कायम की गई, दज्जाल का निशान एक आंख, जिनको देख के ये अंदाजा होता है कि फ्री मेसनरी ये ऐलान करना चाहते हैं कि अब हम इंचार्ज हैं इस दुनिया के। डॉलर पे बनी हुई तस्वीरें अमेरिकी सील से ली गई हैं, जिसके एक साइड पर अकाब बना हुआ है जबकि पिछली साइड पर एक आंख बनी हुई है। The back features the mysterious pyramid and an all-seeing eye. The story of the Great Seal begins with a committee formed on the day the Declaration of Independence was signed, the 4th of July, 1776. इस सील का डिजाइन 1776 में शुरू किया गया और इस सील को बनाने के लिए 4 कमेटियां कायम की गईं, जिन्होंने 6 साल के अरसे में इस सील को डिजाइन किया, जिसका इंचार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन था। फ्रैंकलिन एक ऐसी सील चाहता था जिसके ऊपर हजरत मूसा की तस्वीर बनी हो जो समंदर की तरफ इशारा कर रहे हो, जबकि उस तस्वीर में सामने की तरफ बनी इसराइल और फिरौन को भी दिखाया जाए। मतलब ये कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह मिस्र को जाहिर किया जाए। फिरौन, बनी इसराइल और हजरत मूसा, ये सारी चीजें मिस्र की तरफ इशारा करती थी, जबकि पिरामिड भी मिस्र की तरफ ही इशारा करता है। Benjamin Franklin and other American founding fathers were Freemasons. हतमी डिजाइन कांग्रेस ने 1782 में मंजूर किया, जो फ्रीमेसन जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन की सोच की मुकम्मल तौर पर अक्कासी करता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला हर सिंबल फ्रीमेसनरी के मकासद को जाहिर करता है। सभी जानते हैं कि अमेरिका में जितने भी कानून या पॉलिसीज बनती हैं वो कांग्रेस से पास होते हैं, फिर उन पर व्हाइट हाउस और फिर पेंटागन से अमल दरामद होता है। ये तीनों मरकजी यहूद वाशिंगटन डीसी में है। 2001 के बाद से यहूद खुलकर सामने आ गए और ईसाइयों को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जंग शुरू कर दी, ऐसे मुसलमानों के खिलाफ जो इस्लाम को मजहब होने के अलावा एक मुकम्मल सियासी और माशी निज़ाम मानते हैं। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का सदर मकाम है और डॉलर पर बना यह अकाब अमेरिका का कौमी निशान है। दो चीजें तो साफ नजर आ ही रही हैं, एक वाशिंगटन डीसी और दूसरा पिरामिड्स। मिस्र पिरामिड्स की वजह से बहुत मशहूर है। अगर गौर करें तो पिरामिड्स के पास ये छोटे छोटे दरख्त एक हिलाल की शक्ल में लगे हुए हैं, जो उसी फर्टाइल क्रिसेंट की तरफ इशारा करते हैं जिसमें मिस्र भी शामिल था।